Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the quarantine series. बहुत मजेदार मौजू है आज का। फेसबुक ग्रुप एक सोल ब्रदर्स फॉर लाइफ छाया हुआ है मर्दों के दरमियान, लड़कों के दरमियान, और पाकिस्तानी मेल्स हैव फाउंड अ सपोर्ट ग्रुप, अ ग्रुप वेयर दे ओपन अप, वेयर दे शेयर, और बहुत सारी कॉजेज हैं जो कि क्राउड सोर्स होती हैं। दो इस ग्रुप को चलाने वाले पिछले 5 सालों से डे जॉब्स अपनी करते हैं, लेकिन साथ ही ग्रुप रन करते हैं। Noman and Danish will be joining us from the Soul Brothers group, inshallah. Soul Brothers are Danish or Noman co-founders हैं पाकिस्तान में. Soul Brothers is more than just a group; it's a support system, which they dream to be an agent of positivity in society. दानिश जो है वो मार्केटर हैं प्रोफेशन के वाइज. मेरी मुलाकात हुई है with diverse experiences in social, energy and financial sector. He's a patriot, proud Pakistani and a family man with a passion to make a difference in society. Noman जो है वो seasoned marketer हैं, diverse background रखते हैं energy और consumer electronics का. दोनों हमारे बॉय हजरात बहुत मेहनत करते हैं दिन भर, और फिर शाम में बहुत सारी मेहनत करते हैं हजारों और लोगों के साथ. वेलकम नोमान एंड दानिश ऑन द शो. Thank you, Umair. Thank you for having us. अस्सलाम वालेकुम, thank you. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, all good. आप कैसे? Alhamdulillah. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह. बस चलता रहता है, अप एंड डाउन. Every other day is something new and something different. Noman, I heard you went down the road and now you have returned, recovered. बताएं जरा क्या हुआ आपके साथ? Yes, Alhamdulillah. So, mashallah, say we have recovered. We got COVID positive on the 29th of May, and we did a couple of tests until it got negative. So, by 15th of June, 6 of our family members we recovered. Allah ke fazlo karam se. A lot of our family members went through this sort of crisis. It was very depressing, obviously, but it sort of reconnected the whole family, and networking bhi ho rahi thi, apna kaam bhi chal raha tha, and Allah ka shukr hai ki everyone recovered well, and now we are all away from that tension. And it's all because of the duaएं हमारे घर वालों की, हमारे group में members की. Everyone is thankful for that. Alhamdulillah. Your soul brothers are here, I must tell both of you. Farhan, thank you for joining. Shan Akbar, फारिया हमारी रेगुलर है, बहुत उन्होंने सवाल भी उठाया था. अस्सलाम सोल वालेकुम, ब्रदर्स की फारिया. क्या जरूरत है फारिया? आज बात करेंगे क्या जरूरत है. कुछ लोग रूहानी भाई ट्रांसलेशन भी करते हैं सोल ब्रदर्स की. So good to see all of you. Thank you guys. Danish, how has the lockdown been for you? Lockdown initially, so we were working from home, but the industry that I belong to, it requires us to be careful. It requires us to be in quarantine, but at the same time, I'm one of the members in my family who goes out, and obviously everyone else is in the house, so I have to be very careful. At the same time, following all the SOPs, trying to work through this situation with the brothers. सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. I mean, I think आपने स्टार्ट किया कि क्यों है सोल ब्रदर्स, तो आज पता चल रहा है इसलिए है सोल ब्रदर्स, क्योंकि जब दुनिया में 100 साल बाद एक इतना बड़ा पेंडेमिक आना था, और जब इतने सारे लोगों ने डिप्रेस एक साथ होना था, तो सोल ब्रदर्स को एक साथ होना जरूरी था. So I think होना जरूरी था. बहुत जरूरी है कि बॉयज जो है वो बॉयज के साथ भी हो सके, और बड़ा उससे उनको रिलीफ भी मिलता है, एंड द काइंड ऑफ चैट्स दैट दे हैव. मेरी मुलाकात हुई दानिश से एक इदारे में ट्रेनिंग कराते हुए, और दानिश ने मुझे दावत दी कि मुझे सोल ब्रदर्स ज्वाइन करना चाहिए. जब फेसबुक ग्रुप्स का मेरा कोई खास, मैं आपको पता है इश्तिहारों के लिए ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ ग्रुप्स को, तो मैं साइलेंट ऑब्जर्वर बना दानिश के कहने पे. एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव बीन फैसिनेटेड by the power of online communities. People who don't know each other, people who have never met, come together, help out, advise, are very, very genuine, candid, and this is unlike the profiles and pages conversation. That's what I observed. So thank you, Danish, for including me. और मैंने माजी में गया तो कुछ मेरे वीडियोस के बारे में भी सोल ब्रदर्स के बड़े genuine राय थी, candid था. So it's very nice that boys talk about everything on this group. So that's what we are talking about. Everybody join the conversation. आपके घर में भी, आपके इर्द गिर्द भी जो लड़कियां खवातीन देख रही हैं, मर्द हज़रात मौजूद हैं, और जो बॉयज मर्द हज़रात देख रहे हैं, आप यकीनन कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं
कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन पे आप सिर्फ मेल प्रेजेंस चाहते हैं। आए इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और मजीद जानते हैं कि सोल ब्रदर्स पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है। लेट्स गेट गोइंग। सो जानते हैं कि सोल ब्रदर्स ग्रुप है क्या और व्हाट मेड यू थिंक ऑफ इट? Noman. Acha, so it all started in May 2016. It was sort of a simple idea that Danish and I we thought of. Yeah, there needs to be an all-male platform where we can talk about those things which men can talk about, and normally they don't talk about on social media. Emotionally, मैं ये कह सकता हूँ कि हम बड़े कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है. So for some reasons we're not able to express ourselves because maybe we don't have a support system, and prevailing in our current society जिस तरह आप देखते हैं कि there is a lot of uncertainty, trust issues हैं, credibility और transparency issues हैं. So we identified this loophole, this gray area that we need to address, and we wanted to build a support system जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू करें. So with the passage of time, an idea, when it executed and it took place, so alhamdulillah, by as of today we have about 92,000 members, and these are 92,000 members that trust each others. और इसका जो मोटो है, that's energy, balance and brotherhood. So इसके बारे में थोड़ा सा दानिश आपको बताएंगे, लेकिन this is something that we never thought of कि यार ये this will explode in a way कि यार. And mashallah, we are helping so many families, and we feel proud about it. And it's the we factor. It's not the I or the me factor. It's the collective factor that we've managed to come across. You see, continuing to what Noman said, I'm totally agree to that. The factor was that एक perception ये था कि जिस तरह हम लोग अपने आप को for granted लेते हैं ना, men. I mean, there's no two thoughts about it कि एक male dominated society है, but उसके अंदर जो men for granted वाला factor है ना, because the stats speak for themselves. I mean, we are still the most depressed people on the planet Earth. I mean, men are more depressed, whether you like it or not. The facts state. And sorry, men choose to laugh about it like me. I'm very sorry for my insensitivities. Exactly. But yeah, men are. Okay, so एक ये point था. So फिर उसके बाद the motto that Noman talked about. I mean, we didn't even think of these mottos and anything. शुरू में तो we said, Noman was like कर रहे हैं, हाँ कर लेते हैं. I was like देखो क्या होता है. So the thing is कि it took us a long time to have this strength on the group. Why? Because each and every profile that comes on the group goes through a very tough screening process. Obviously, over the time, बढ़ता गया, and we got a lot of moderators. हमारे जो moderators हैं, they're doing a splendid job. I mean, Midhat, Muiz, Hassan, Ammar. I mean, these are the guys who are members Faizan, only. Yeah. Faizan. और ये members अच्छा, उन्हीं में से moderators बने. Wonderful. इसकी बात है, जो interest लेते गए, जिन्होंने feedbacks अच्छे दिए, जिन्होंने group को improve करने के लिए अपना personal time देना शुरू किया, they joined us. I mean, we didn't know them from before, most of them, and they came in and they're doing a wonderful job. So energy, balance, brotherhood क्या है? I mean, I'm sorry to say, when you talk about men, energy does come with it. So whether somebody likes it or not, energy does come with men. Balance. It comes with women as well, but yeah. No. So that's where the second part comes. Energy. I've just been labeled as trash by Maz bin Tariq. Feminists are trash. I must tell you, Maz, I'm a feminist. I don't think he's saying this to you, but chale. So second part is balance. So if there is energy, it's very important to have balance. I mean, extremism of all sorts, extreme views of all sorts are countered with balance. अगर आप religious fanatic हैं, liberal fascist हैं, भैया balance से ही मसला हल होगा. आपको कोई middle ground पे आना पड़ेगा. और तीसरी चीज जो सबसे important है वो brotherhood है. Energy, balance, brotherhood. So these are the three things that we thought of combines the whole theory behind Soul Brothers. Helping वाला part खाली financial नहीं है. Emotional सबसे बड़ा part है इस group की help का. There's a segment called Anonymous Soul Brother, जिसके ऊपर लोग अपनी stories बताते हैं और ऐसी secrets हम लोग अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं कि हम लोग उनकी identities भी रखते हैं. We don't share them with others, and people have real genuine issues जो openly लड़के बात नहीं कर सकते, whether it's their married life, whether it's their sexual issue,
whether it's something just related to their opposite gender, same gender, whatever, office, boss, you name it, corporate culture, pressure. So these are the wide True. variety of topics that they want to talk about. And then, it kept on evolving. It's still evolving, and we're still learning. Every day is a new learning for us. True. And Got it. Wonderfully explained. Very beautifully explained there by both the co-founders of the Soul Brothers Group. Soul Brothers Group is 92,000 members strong now, और बहुत अच्छी community है for males. It's been run for 5 years now. Mandate तो आपने बता ही दिया. आप ये enable करते कैसे हैं? जो आपने 3 अल्फाज हमें बताएं, the balance, the brotherhood. How do you enable it? अच्छा, इसमें I think I'll start with it कि normally what we do is कि we looking for unconditional responses from members who are in the group and community members, जिससे which we discussed earlier कि it's a crowdsourced platform and this group is not a movement or represent of something of a vigilante elements, but we want people to help each other. That's where we come in. So what we do is कि if a person is asking for an advice, a consultation, a business facilitation, or an investment, okay? A member comes in and he comes up with a response based on whatever resources and affiliation he has. इसमें उसका कोई personal benefit या कोई incentive नहीं है, ठीक है? वो सदका जारिया के तौर पे उसको help कर लेता है, and it turns out कि उसको उसका फायदा होता है. Now we encourage that man, that original poster जिसको हम लोग op भी कहते हैं, कि please repost it with the success story. So we highlight these success stories to build that trust and credibility amongst the group. इसका फायदा ये होता है कि अब जो members है ना, वो एक stranger को, यानी कि जिसको जानते भी नहीं है, जिसका उनसे कोई ताल्लुक भी नहीं है, and they start relying on what he is saying. But to reach that point, it took us many years, and I don't know, thousands of case studies that we don't even remember. On daily basis, they're coming in. तो जब तक trust और credibility की case studies और examples हम सामने नहीं रखते और उनको highlight नहीं करते, तो जो हमारी रीच है उसको वो समझ में नहीं आएगा कि यार ये एक्चुअली इस ग्रुप का पर्पस क्या है. बिकॉज आई टेल यू विद द फैक्ट, जिस तरह दानिश ने बात की कि स्टैट्स एंड इनसाइट्स एंड नंबर्स, पहले जो भी ग्रुप में ऐड होता था, मोस्टली दे यूज्ड टू रिक्वेस्ट टू जॉइन और दे वर एडेड बाय द म्यूचुअल्स. वो ये पूछते थे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप. बहुत पहले सवाल आते थे. बट नाउ दैट वी रियलाइज कि लॉट ऑफ केसेस आर कमिंग इन एंड पीपल आर गेटिंग अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज, लोगों का फायदा हो रहा है, दोज क्वेश्चंस हैव स्टॉप्ड कमिंग इन एंड पीपल आर स्पेसिफिकली कमिंग टू द ग्रुप just to get their queries answered. जो 10 साल तक उनके मसले फंसे थे, they get solved within minutes and few hours, alhamdulillah, with the help and support of brothers. If you allow me कि इसको मैं इंटरेस्टिंग फटेबाजी शुरू हो गई है सोल ब्रदर्स और सोल सिस्टर्स के दरमियान. आखिर में करेंगे वो कहते हैं सरफराज कहते नहीं मैं अब बिल्कुल अब हम सारे के सारे मीडिया में शामिल हो गए. TRPs are these are the new TRPs. कल हेडलाइन होगी ये. But I like what is mentioned here, and I'm aligning this with the mandate, and I'm going to personally back this. लेकिन मैं इसको डिफेंड भी करूंगा कि सोल सिस्टर्स ग्रुप पे शायद ऐसा क्यों होता है मेरे ओपिनियन में. My wife has subscribed to Soul Sisters and I have subscribed to Soul Brothers. Mashallah, you are the Soul family. The main difference is that men are not bitching about girls or women on the group. Instead, there's a lot of productive talk. Sarfaraz, I'd like to know how you know what happens on the Soul Sisters group, and so clearly that too. But I must also tell you, Sarfaraz, that this is a dominant issue for women. This is a dominant issue for women because we, the men, as fathers, as husbands, as brothers, as friends, determine a whole lot, comment on a whole lot, and that's not the case with men many a times. In contrary to Soul Sisters, where women and girls don't stop complaining, and a few fake feminists, बहुत सारी judgments हैं इसमें, लेकिन I will come to this. Very interesting. Danish, you were saying something. So I was talking about enabling वाला question आपका था. आजकल जो चल रहा है ना, लेटेस्ट पे बात करते हैं, जर्नी पे थोड़ी बात हो गई. आजकल ये है कि आप एक ट्रेनर हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, नया मेंबर आता है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि देयर आर पीपल हु कम अप विद लॉट ऑफ डिफरेंट परसेप्शंस अबाउट द ग्रुप. में आऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, राइट. बट वो किस तरह होता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है, जिसके अंदर जो हमने जो देखा कि 6 महीने जो ग्रुप पे गुजार लेता है, वो फिर इस काबिल हो जाता है कि वो लोगों को ट्रेन करना शुरू कर देता है. I mean, हमें हर चीज पे बहुत ज्यादा पुलिसिंग नहीं करनी, हमने खाली ब्रॉड ग्रुप के रूल्स बता दिए, नॉर्म्स बता दिए.
Yes. और उसके बाद members have to drive it. अगर हर चीज में हम लोगों ने डंडा लेके घूमना पड़ गया हमको, तो it will not work. It has to work with a communal effort, a community effort. Yeah. So that's how it works. अब इसकी True. मैं छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटा सा वाकया, if you're covering it in this part, तो I have a lot of stories, but इस जगह पे Please बताऊं go on. कि for example, who would have thought कि कराची में quarantine start हुआ, lockdown start हुआ, the first lockdown when the strictest lockdown was in place, and there was this post, a pending post came which said मैं 5 स्टार चौरंगी लियाकताबाद में कहीं पे खड़ा हूँ, मैं कराची में नया हूं और आज मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो गया है, एंड दैट गाय वाज ऑन द रोड alone. He did not have a taxi, he did not have anything, no bike here, no Kareem, no nothing, and he's like, I have to get to Share Faisal somewhere, Karsaz somewhere. If somebody picked up the phone, he got there on a bike, picked that guy up, Wow. random guy standing on the road, and dropped him. After half an hour उसने selfie लगा दी, a soul brother came and just dropped. I mean, limitless वाकयात of people saying, And मेरी even माँ paid in बीमार है. cash. Yeah. We paid in cash and probably he didn't take it, but I'm just saying कि एक अजनबी बंदा लाहौर से आया हुआ, कराची का एक बंदा बाइक पर आया, उसको पिक किया, उसको ले गया. मतलब किसी ने ये नहीं सोचा उस वक्त कि स्नैचिंग हो जाएगी, सिक्योरिटी इशू है, ये वो है. क्या था? बिकॉज वहां पे एक आपका ट्रस्ट डेवलप होता है ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता. ऑब्वियसली वी हैव टू डू पुलिसिंग व्हेन देयर आर फ्रॉड इश्यूज. पीपल ट्राई टू, सब अच्छा नहीं है. I mean, people try to take advantage of nice people as well. But that is where all the good people combine, and that is where we put a lot of effort of the membership criteria in the group, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएं और norms को follow करते करते you have a social impact going on, and that is the whole enabling part of it. Yeah, and alongside all of this, I think a lot of prayers are generated. Somebody in problem, somebody facing a problem. बिल्कुल ऐसे ही. It's fascinating, wonderful. We are with the Soul Brothers founders, Noman and Danish Javed. Thank you for all the love, guys and girls. Nayab, Azra. Azra says it's okay to be judgmental on Soul Brothers or Soul Sisters group both. That's why these groups are for. We support, we listen, we understand, we work towards changing behaviors. That's the mandate, hopefully, for all the support groups. How do you guys respond? It's okay to be judgmental वाली बात तो यही है ना कि जब ग्रुप पे हर तरह की बात होगी तो हर तरह की जजमेंट भी होगी. So I think that part is correct. अगर जजमेंट नहीं होगी तो ग्रुप पे अलाउ कैसे करेंगे different topics? यही तो बात है. I mean, if somebody has to think twice before saying something on the group, then फायदा ही नहीं है ना उसका. Absolutely. हाँ, broad guidelines हैं, direct abuse नहीं है, किसी की प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन लीक करना नहीं है, किसी को डायरेक्टली एथनिक वायलेंस नहीं है, किसी के रिलीजन पे हमला करना नहीं है. ये तो ब्रॉड इंसानियत की चीजें हैं, बट उसके अलावा किसी की वही चीज जो दानिश कह रहा है. सेकंड टाइम डिश मोर ओवर, अब हमारे पास अगर 90,000 प्लस मेंबर्स हैं, सो वी डीलिंग विद 90,000 डिफरेंट माइंडसेट्स. सिमिलरली एक ग्रुप में अगर 2.5 लाख मेंबर है, सो देयर डिफरेंट माइंडसेट्स. द आइडिया इज कि वन पर्सनस comment or reaction does not represent the whole group. That's where the balance comes in, which is why we always focus on that part as well. कि हम हमेशा लोगों को भी यही कोशिश करते हैं बताने की यार ये सबकी ideology है, they are representing it as far as it coincides with the guidelines and the policy. It is fine. तो लेकिन हम we can obviously agree to disagree by the end of the day, but it's their individual perception and their idea. Nomi, we have a feedback you now. know what is coming to my mind right now looking at the comments is somebody's ये जो चलता है ना नबील खान और जो चल रहा है about soul brothers and sisters. Not a bad idea to put some of the best soul brothers and sisters together for like a diverse dialogue, but I'd like to know from the two of you, okay, before that happens and before we arrive at that, why gender specific groups are helpful in our culture. लड़कियों का ग्रुप बना तबाही छा गया, आपने बॉयज का बनाया तबाही छा गया. The general impression is men don't need a space in our society. Also, what made these soul brothers click? एक random अजनबी कराची में मौजूद 5 स्टार चुरंगी के कोई और उसको आगे उठा लेता है, एक पोस्ट पे ड्रॉप करता है, ग्रुप पे तस्वीर डालता है, लोग #SVP love soul sisters भी मैंने यही इसी तरह की ओनरशिप सुनी है. So please talk about it. So what motivates it? I mean, the इससे पहले जेंडर स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में भी थोड़ा सा बात करना दानिश. देखिए जेंडर स्पेसिफिक पे जो हमने बात की शुरू में,
कि ये कोई डिवाइड नहीं है, हम ये क्लियर करना चाहते हैं, ये कोई डिवाइड नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं है और ये कोई लड़ाई नहीं है। एक चीज वेरी क्लियर, कोई ऐसा मसला नहीं। ये सिर्फ ये चीज है कि हमारी जो इंस्पिरेशन थी वो ये थी कि एक मेन परसेप्शन को हम देखें कि यार मर्द को दर्द नहीं होता वाला जो पार्ट है ना, वो होता है, हमें पता चल गया, और बहुत जोर का होता है, और उसके लिए मर्द आई थिंक मर्द से ही बात करता है। कुछ चीजें उसकी आई थिंक जो हमारी सोसाइटी की कुछ अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी चीजें हमारी सोसाइटी में, और कुछ हमारी सोसाइटी में हर सोसाइटी की तरह बुरी भी हैं। अच्छाई बुराई हर सोसाइटी में होती है। सो फाइंडिंग दैट पार्ट कि यार ये जेंडर का इशू है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द इश्यूज आर कॉमन ना। लड़के का इशू तो ये नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिजिकल इशू हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड इशू हो, सोसाइटी ने जो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन पकड़ाई हुई है उससे रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो तो मर्द का ही रिलेट करेगा ना। आई मीन जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। एम्पैथी ज्यादा होती है, मर्द समझ सकता है मर्द को जिस तरह लड़कियां लड़कियों को समझती हैं। ठीक है यार, ट्रू, मेक सेंस, मेक सेंस। सो व्हाट मेक्स सोल ब्रदर्स क्लिक, नोमान? वुड यू लाइक टू आंसर दैट? I अब think आप 5 साल इतना देख रहे हैं and you of course follow what works, what is it that then makes them click with each other? I think then again I'll revisit the idea that I discussed earlier. It's the trust, the level of credibility that we are sort of engaging. But moreover, I think दो तीन ऐसे points हैं which I realize, which we realize with the passage of time, कि एक हमारे एक disconnect है between the millennials and generation X and Y. तो हम लोग we sort of only see criticism, and it's not a constructive criticism. So we want to reconnect and coexist in the same platform that we can discuss about the issues that we all face. And specifically why? Because जो हमारे generation X and Y हैं, they उनके experience है, and they want to share those skills and experience to the millennials कि यार आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवार सकते हैं। हम normally अपनी advice लेते हैं अपने family members में, जो एक बड़े close spaces में हम restrict होते हैं। It is better to get advice and perspective of a third person, जिसकी वजह से हमने एक मेच्योर मेल ऑडियंस कम्युनिटी में हम चाहते हैं। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा या इवन और मेंबर्स को भी लगा है कि एक डिस्कनेक्ट बिटवीन पाकिस्तानी लिविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड। कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो। एंड मेल ऑडियंस, ऑब्वियसली अगर हम 12 करोड़ की एक मेल पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो हम कनेक्ट कहाँ हो रहे हैं आपस में? इज़ देयर फिजिकली तो हम शायद मुजाहिरों में या टीवी या चैनल्स में देख रहे होते हैं या स्टेडियम्स में होते हैं, बट देयर इज़ नो वर्चुअलिटी इन्वॉल्व जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे को शेयर करें। और इसकी वजह से देयर हैव बीन ऑफसेट्स, इसके ऑफसेट और डिविजन्स क्या बने? अनोनिमस सोल ब्रदर बन गया, ठीक है, SBP गाय टॉक बन गया। सो वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग इट, हम इनको इरेडिकेशन या इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए क्या बात करते हैं? वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी टॉक अबाउट neuro-linguistic practitioners which are coming on board and talking about men's psychology, physiology. Danish has a point. Danish, you can share that. वैसे इस चीज को बताने के लिए मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बिकॉज गाय टॉक की बात हो रही है। द फर्स्ट गाय टॉक सेशन, सो हमारा जो स्पीकर सीरीज सेशन होता है वो उसको हम द गाय टॉक कहते हैं। द फर्स्ट गाय टॉक सेशन ऑन सोल ब्रदर्स वाज डन बाय अ वुमन। सही है, इट वाज अ लेडी हु डिड इट, एंड इट वाज ऑन व्हाट? It was on what? It was on issues men don't speak about. सही है, that was our first guy talk session. Oh, very cool. So, I like it. हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि इस फोरम पे, and she was, I won't name the lady right now, but she was like यार इधर सारे मर्द हैं, क्या होगा, should I not? मैंने कहा listen, try it out. Like say, and she was so positive. People like, sister, let me know ये क्या होता है वो। I mean she was a well versed. फिर हमारा सेकंड गाय टॉक का टॉपिक एक दफा था चाइल्ड कस्टडी केसेस इन पाकिस्तान फॉर मेन। किसी ने सोचा है? आई मीन इस तरह के इश्यूज, लॉयर्स, वी टॉकिंग अबाउट हाउ मेन कैन एक्चुअली हैव चाइल्ड कस्टडी इन केस ऑफ डिवोर्सेस, व्हिच इज वेरी। एक और जो पैटर्न हमने देखा, आई मीन आई डोंट वांट टू कंपेयर इट विद एनीथिंग, बट लेट मी टेल यू, whenever there is a query when it comes to family, when it comes to conflicts within the family, I guarantee you and assure you 70% of the comments and the people they're participating, they're talking about तुम्ही ने कोई गलती की होगी, तुम्हारी बीवी सही है, तुम्ही ने कोई गलती की होगी, यार मना लो, तुम्ही ने कोई गलती होगी, तुम्हारी वालदा सही बात कर रही होंगी। I mean, this is a behavior that I've seen in men more,
I don't know what happens on the other side of the fence, but I can assure you this. ये बड़ी खतरनाक बात है दानिश, ये स्ट्रेंथ नहीं है. ये बहुत अच्छी बात है. This is drama triangle, darling. No, I think this has actually worked. but I like it. I like it. हाँ. देखो जो खूबसूरत बात है ना, I learned this from Faisal Qureshi. He said कि जब कलाम होता है तो इस्लाह होती है, और उसके बाद अमल अच्छा लगता है. अगर कलाम की इजाजत ना हो, कॉन्वर्जेशन की इजाजत ना हो, तो इस्लाह नहीं हो सकती. सो हमें बगैर खौफ के तमीज से अगर हम अपना जो भी नजरिया है, चाहे वो जजमेंट ही क्यों ना हो, जब हम पुट फॉरवर्ड करते हैं जिस तरह इन ग्रुप्स में करते हैं, तो जो भी हमें करेक्ट कर देता है, कम से कम उसको मौका तो मिलता है ना हमें करेक्ट करने का, और हमें मौका मिलता है हमारी इस्लाह होने की. सो बहुत खूबसूरत बात है, आपसे बात करके भी बहुत मजा आ रहा है. एंड माशाल्लाह आई कैन सी के व्हाई द ग्रुप हैज द स्ट्रेंथ दैट इट हैज. आइडियोलॉजी से बड़ा फर्क पड़ता है. वी हैव सीन मेनी थिंग्स स्टार्ट आउट एंड दे लूज ऑन द वे, लेकिन अगर फाउंडर्स आपके दिमाग में फलसफा क्लियर हो, और आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हो जिस पे आप कायम रहे हैं, एट द सेम टाइम इवॉल्व करते रहे हैं, these are some great recipes for building the community and bringing it this far. Somebody Umair, said Soul Brothers has got to the next level, and I'd agree with that. जी. अच्छा उमेर, I have one point जो आपने बात की थी, क्योंकि it is related to sustainability as well. क्योंकि that is the biggest challenge कि हम एक पहाड़ बना दें, लेकिन उस पर अगर हम कोई सड़क ना बनाए ऊपर टॉप पे रीच करने के लिए, so it doesn't really make any sense. So sustainability के लिए हमने rules and regulations को बार बार हैमर भी करना होता है, बट एट द सेम टाइम वी रियलाइज कि यार मर्द को डिक्टेशन पसंद नहीं है. वो ऑलरेडी इतना मतलब हमारे माशरे में इतना पिस चुका है, या ही सफरिंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, पॉलिटिकल एंड सो ऑन. तो उसको डिक्टेशन भी पसंद नहीं है. सो इन अ सटल वे वी ट्राई टू गेट ऑन द फील्ड, एक वर्चुअल फील्ड जिसको हम कहेंगे, और वहाँ पे वी ट्राई टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज ऑन इंडिविजुअल लेवल. ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन. ताकि हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बाहर आगे जाके मेंबर्स भी ख्याल रखेंगे कि यार ये लोग खुद ओनरशिप ले रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी ट्राई टू ओन इट एज वेल. सो दैट्स वेयर द कांसेप्ट ऑफ ओनरशिप कम्स इन. वंडरफुल, वंडरफुल, फैसिनेटिंग. जनाब, क्या आपको किन चीजों ने अभी तक फैसिनेट किया है? Because you so much conversation, chatter every day, commentary, help, और फिर वो हेल्प हो भी जाना. अभी किसी ने कहा जिस तरह एक किसी स्पेशल पर्सन के लिए बाइक का इंतजाम हो गया. So what has fascinated you the most in terms of the learnings that you've acquired? Noman, you can start with this. Achha, just recently, because it's a very relatable topic as well, especially during times of pandemic. एक हमारे member हैं मोहम्मद उसामा महमूद. So he is an agriculturist by profession. उनका मलीद में एक setup है चीकू का, और for some reason, for very obvious reason, export नहीं हो रहे थे हमारे fruits. So he reached out to the wholesale market. वहाँ से भी उनको मना हो गया, not हो गया. So then he reached out for support and not exactly help, but support from the group. And the way he invited people, Chiku, and the way he invited, it was so candid and organic. वो कह रहे थे यार मेरा farm है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे आके खरीदो, but just come over, chill with your family like a farmhouse, and I'm inviting you. It's an open invitation. And it turns out we came to know to the report through Times of Karachi (TOK) कि in 2 days 3,500 individual members with their families, they visited the farm, and not only that, उनका जो पूरा स्टॉक था चीकू का, it was finished with advance booking. This was just one event, and we couldn't recall कि यार ये post कब हुआ था और किस तरह लोगों ने आके help किए. So this is the beauty of the community, how it happened, and this is just one of the cases. We've got so many cases. एक और मैं चीज बताना चाहूँ कि learnings की आपने बात की ना, मैं बताऊं एक चीज जो हमारे KLI के लोगों में प्रॉब्लम है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हमें लगता है यही पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान खत्म नहीं है. तो आई थिंक दिस इज अनदर थिंग. आपने तो लाहौर इस्लामाबाद ऐसे ही मिला दिया. मुझे तो लगता है कराची वालों को लगता है कि बस वो हमारी मार्केटिंग की टर्म है ना KLI. भाई तो K और L तो आए को शामिल ही नहीं करते KLI में. देखिए वो बड़े इदारों ने देखिए एक न्यूमेरिक सुपीरियरिटी को तो आप कुछ कह नहीं सकते. बात ये
but But you're right मैं that the urban मैं लर्निंग center पे आ in रहा हूँ Pakistan मैं thinks that लर्निंग they पे आ are रहा हूँ it. कि यार हमें देखें क्या मिला इससे हमें ये फायदा हुआ कि एक मीरपुर खास से एक बंदा बड़ा सादा सा सवाल भी करता है ना तो कोई कराची में बैठा हुआ लाहौर में बैठा हुआ बंदा उसको कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग का जवाब भी दे सकता है या उसकी सादगी को भी अपना सकता है आप देखें ना हम लोगों की शहर की लाइफ में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं एक छोटे शहर की डायनामिक्स बिल्कुल फर्क है so we're True. actually at the end of the day the next learning that we are getting is we're connecting the whole country it's not specific to a city a race an ethnicity a group a Yeah. religion it's not and we're connecting everyone गिलगित बल्तिस्तान से एक बंदा शहद बेच रहा है and he's talking about his supply chain and he's talking about what's going on there we're talking mythbusters we have taken special measures when it came to covid and fake news obviously Facebook filters help us out a lot but you know this takes a lot of time and effort from all the moderators again Ammar Faizan Yeah. Hassan all these guys Muiz Midhat they put so much effort हम लोग अगर मतलब इसके man hours लगाएं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं हम कैसे कर but at the same time Yeah. you know the sense of achievement that it gives you the system that is going on I mean एक वाकया somebody told me a brother told me कि यार random बंदा आया बोला ब्लड देना है आप कहाँ से आए हो यार मैंने तो नहीं बोला वो सोल ब्रदर्स पे किसी ने लगाया हुआ था तो मैं ब्लड देने आया हूँ किसको देना है एंड यू नो दिस हैपेंस सो मेनी टाइम्स Yeah. वो जानता नहीं है दूसरे बंदे को नंबर नहीं है वो बगैर नंबर के ही किसी हॉस्पिटल पहुंच गया सो इस तरह की चीजें अच्छा राशन ड्राइव का दानिश माशाल्लाह इतना सारा काम हो रहा है दानिश मैं मस्ती में आ गया हूँ क्या करें ब्रदर्स ग्रुप चल रहा है सो ये तो वजह नहीं है कि लड़कियां नहीं है जो बॉयज इतना प्रोडक्टिव है माशाल्लाह ट्रिक क्वेश्चन नुमान जवाब ना देना ट्रिक क्वेश्चन हाँ ये troublesome I घेरा would जा like रहा to है ask घेरा जा रहा है I would like to ask this question generally, वैसे. हाँ. Does that, but diversity, of course, improves creativity, improves the level of output. I'm not sure whether it works well for productivity in our culture or not. अच्छा उमेर I I speak, think I speak for myself. I speak for myself as a soul brother. नहीं that's fine you're entitled to your opinion अच्छा एक चीज थी उमेर I'll share an Yes. insight with you because हम तो Yeah. डेली के बेसिस पे नंबर्स देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में जो हमने ट्रेंड देखा है जो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट हमारे ग्रुप पे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आई है वो इस तरह की आई जैसे यार मेरी अम्मी ने घर का खाना शुरू किया है और घर का जो है वो सिलसिला Wow. है उस पे लोग दे पीपल आर बार्जिंग इन यार हमें घर का खाना करना है ये करना है वीकली हिसाब है समवन अ लेडी हुज ड्राइविंग अ कार और अ बाइकिया में उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट हो रही है किसी ने अपनी बहन हू ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफर्ड कमिंग फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर बैकग्राउंड उसने वो स्टोरी लिखी है she's getting a lot of engagement on the post and all of it is coming through the male audience of our group तो ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं चक्कर यार कि हम लोग एंटी वुमेन बात कर रहे हैं या इसमें engagement नहीं आ रही so you get one of the highest number of engagement on such content Of course, So of course. answering that point as well, I'd like to answer that. जो आपने बोला ना कि प्रोडक्टिव हम ज्यादा क्यों हैं यहाँ पे या और कोई देखिए बात ये है अच्छा कि वो मैं ऐसे मस्ती में कह रहा था आप तो दिल प्लेटफॉर्म पे ही ले गए. प्रोडक्टिविटी के लिए बना है देखें प्लेटफॉर्म ही प्रोडक्टिविटी के लिए बना है बाय द वे इसका ये मतलब नहीं है कि तफरी नहीं होती हम लोग अलाउ करते हैं फन हैज टू बी देयर I'll tell you one of the biggest feedbacks and one of Otherwise, the boys biggest are not there. yeah I mean one of the biggest feedbacks that I get from a lot of people रात को 10 मिनट सोने से पहले सोल ब्रदर्स देखता हूँ स्माइल आ जाती है चेहरे पर सो जाता I mean इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है It's true. That's a great story, Danish. Numan, I must say कि probably it's undermined, but community building is one of the most powerful things to be doing these days. और अगर आप कम्युनिटी वीव करके उसको किसी डायरेक्शन में चला सकते हैं तो आप मुस्तकबिल के क्या हाल के इन्फ्लुएंशियल हैं और हर हवाले से whether that's economics, whether that's politics, social और आपकी सारी कहानियों में सारी चीजें नजर आती हैं. I'm just reflect fearing that yes, it reflect होती हैं. बहुत खूबसूरत बात है. बिल्कुल जोया, I'm very very keen on doing it. I would love to. Why not? Um, Thank you guys for your comments, for including किसने पूछा क्या टॉपिक पे बात हो रही है. हम बात कर रहे हैं सोल ब्रदर्स. एक ग्रुप है for men, for males और very powerful group, माशाल्लाह 92,000 members strong now.
और बहुत अच्छा आउटलेट भी है, हेल्प फोरम भी है, सपोर्ट फोरम भी है, लर्निंग भी होती है, एंड इट हैज बिकम रियली रियली अ वाइब्रेंट कम्युनिटी। उनके फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान और दानिश। तो ये मौजू है आज का, कि नुमान और दानिश ने क्या सीखा, और हम ये बात कर रहे थे कि कम्युनिटी बिल्डिंग आज के दौर में कितनी अहम हो गई है। एक बात और भी है कि कोरोना में लोग जो अकेले महसूस करते हैं, जो अच्छे ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हैं, डिजिटली कनेक्टेड हैं, दे डोंट फील सो लोनली। एंड लाइक यू हाईलाइटेड दैट कोरोना में सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि आई थिंक ये brotherhood has been a source of strength, because people have shared their worries, people have shared who's going through the disease, their family. तो वो एक, you know, it has sort of generated a Man, did you lot. see the doctors? Did you see the doctors we have? We have more than 50 to 60 doctors, out of which 15 or 10 have actually done regular sessions on the 16, group during yeah. COVID, जिसके अंदर different topics पे, I mean, from depression, from tackling, from basic, you talk about preventive medicine, prevention. I mean, throughout that time, these doctors stepped up. I mean, I'm talking about Ehsan की मैं बात करता हूँ. Dr. Ehsan is a Yeah. now a friend. I just met him on the group. But 6 दिन हफ्ते में ड्यूटी करना, अपनी फैमिली से ना मिलना और उसके बाद यहाँ पे आके टाइम देना, it's not a joke. I mean, we're talking Yeah. about another of our brothers, Zafar, who's doing a yoga session every day. Every day. Every day, the guy comes on the group and does a live, proper yoga session, which he can earn professionally from. And he does, and he's a professional, and he does a proper yoga session every single day. I mean, we're talking to people like this who take out time for what? For unknown people who are just brothers and they're on the group. Like you. You're not unknown, of course, but you're still there. हाय भाई, ये जोया ये बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की। आई मस्ट से दैट। और मुझे बहुत इन दोनों ने कहा था कि मैं ये मौजू मैंने सवालात में डाला था और हम ना छेड़ें, लेकिन चूंकि आप शामिल थी और किसी ने कुछ कहा तो आई इंक्लूडेड, बट दैट्स नॉट, इट्स, आई डोंट थिंक द फाउंडर्स अंडरमाइन, बट यस जनरली द मेंबर्स टॉक अबाउट दैट, जिस तरह कमेंट्स में भी आया। ये बात आई थिंक इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड कि जो बॉयज के जो स्टैंडर्ड चैलेंजेस हैं उसमें ऑफ कोर्स इमोशनल आउटलेट्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक वरीज हैं, लॉट ऑफ life things, I need a fix for this, I'm trying to sort this. And for women it is a lot of household issues, so I think it's very well understood. Yeah, I wanted to say that. ठीक है जी, thank you. मैं जरा comments में lost हो गया, sorry the two of you, because I didn't want to leave it there. मैं आपके behalf पे ये perception नहीं create करना चाहता था कतई, तो I wanted to clarify that. Okay, so let's do some fun. Okay, we're gonna be judgmental in this. Alright, और फन ये है कि भाई क्या 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 मिजाज आपको नजर आए, किस किस क्या क्या खसलतें या किस किस तरह के लोग आपको नजर आते हैं डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं। देखिए, इसका नेवर एक क्लियर आंसर। हम 92,000 लोगों से बात करें, देयर 92,000 डाइवर्सिटीज। कोई राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है। एक डालते हैं ना, एक एक ट्रेड देते हैं। गुस्से वाला ब्रदर, तू बोल सॉफ्ट वाला ब्रदर, फिर तू बोल एंग्री यंग मैन वाला ब्रदर, एक है ठंडा ब्रदर, एक है यंग ब्रदर, एक है ओल्ड ब्रदर, एक गरम ब्रदर, एक नहीं वो वाला वो नहीं था। वी हैव अ फादर एंड हिज 2 किड्स ऑन, मतलब इस तरह भी है कि दादा भी है, बाप भी है और 2 बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, एंड देयर ऑल समटाइम्स एनोनिमस पोस्ट के यार वो दादा देख लेंगे और वो देख लेगा, है ना, इस तरह भी हो रहा है। the whole family is in, तो फैमिली वाला ब्रदर हंसते ऐसे ही है, बहुत परेशान ब्रदर। अच्छा, इसमें वैसे अपार्ट फ्रॉम दैट उमेर, हमारे जो डाइवर्सिटी है ना इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल एक्टिविज्म, इसमें भी हमारे पास इतने मतलब देयर इज अ होल रेंज और होल वैरायटी, और इट इज़ अ स्ट्रेंथ एज वेल, बट एट द सेम टाइम इट्स अ चैलेंज एज वेल, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि यार ऐसा ना हो कि ग्रुप का जो डायरेक्शन है ना वो फेमिनिज्म बैंड वैगन पे चला जाए, या वो रिलीजियस एक डायरेक्शन पे चला जाए, एक क्लैश पे चला जाए, पर्सनैलिटी इश्यूज पे चला जाए. सो दैट्स वेयर वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ get involved, negotiate, sort of keep a balance. So it is the most challenging part, because that's the part where we take that the moderation takes the most amount of time from all of us, which is why we always encourage yaar
फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दिया है, रिपोर्ट ऑप्शन, रिपोर्ट द कमेंट, रिपोर्ट द पोस्ट, प्लीज गेट इन्वॉल्व, ओन द प्लेटफॉर्म। जिस तरह हमारे यहाँ ओनरशिप की कमी है ना यार, हम बस किसी से वी गेट ऑफेंडेड, इनबॉक्स कर दिया यार, उसको निकाल बाहर करो यार, ये मेरे साथ पर्सनल हो गया। सो द क्वेश्चन इज नॉट दैट, द क्वेश्चन इज यार, इज ही वायलेटिंग द कम्युनिटी, द प्लेटफॉर्म इन जनरल, उसकी बात में क्या I वेटेज won't है? name a celebrity. Beautifully I put. won't name a celebrity. Rules are rules. We've thrown at least 3 very influential celebrities out of the group on violations. So it's not about कौन कहाँ से आया है. There is a violation. We try to sort it out. If there is no apology, यार सो अगर nothing मेरे doing. एक मसला हो कि मुझे कोई तंग कर रहा हो, कोई एक ब्रदर भरम करा रहा हो, तो क्या सोल ब्रदर्स पे अगर ऐसी उसने आपको अगर गाली नहीं दी और भरम करा रहा है तो आप भरम सह लें. आपको पता कराची है मैं यूनिवर्सिटी, आपको दानिश पता है कराची मैं यूनिवर्सिटी कभी में फिजिकली फड्डा नहीं किया, मुझे पता है मैं हाँ? बहुत बुरा पिटूंगा। नहीं, So I ये तो always इस चीज से आपने उमेर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज किया मजाक में. द सोशल मीडिया बिहेवियर दैट वी टॉक अबाउट, हम लोग एक और चीज को बड़ी मुश्किल से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये ग्लोबल फिनोमेना है कि ये जो सोशल वॉल है ना, इसके दूसरी साइड पे हम लोग सोचते नहीं है कि इस आदमी से मैं रियल लाइफ में इस तरह बात कर सकता हूँ, इसके मुंह पे ये बात कह सकता हूँ मैं. सो द बैरियर ऑफ सोशल मीडिया हैज एक्चुअली, आई एम सॉरी, शायद मेरा ओपिनियन किसी को बुरा लगे, हैज डिस्ट्रॉयड द लेवल ऑफ एथिक्स इन आवर सोसाइटी. जिन लोगों के मुंह पे बात करने से पहले हम 10 दफा सोचें रियल लाइफ में, वो अच्छा भी है बुरा भी है. अच्छा इस तरह है कि यार आप खुल के बात कर सकते हो, बुरा इसलिए कि आप तमीज तहजीब इज्जत. तो ग्रुप के अंदर हमने ये देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट पीपल हैव डेवलप्ड देयर क्रेडिबिलिटी एज वेल. आहिस्ता आहिस्ता रिस्पेक्ट लोगों ने अर्न की, तो सोशल मीडिया बिहेवियर भी उस तरह उनका मूव हो रहा है. तो इफ समबडी फॉर एग्जांपल इज अ सीनियर पर्सन और वहां पे बहुत ही कोई यंगस्टर आता है, वो इमोशनल हो रहा है, तो 3-4 लोग उसको समझाते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ही इज एन ओल्ड गाय या ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या प्लीज यू नो. तो इस तरह का बिहेवियर भी हम देख रहे हैं, बट आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे अहेड. बट ये जो सोशल मीडिया बिहेवियर का जो ओवरऑल एक फिनोमेना है ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल वुड बी एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रियल लाइफ ऑन योर फेस rather than you know on social media कोई भी fake ID बना के कुछ भी बोल दे. So yeah, you know you can say whatever you want. So ये एक बड़ा important part था इसमें जो मैं highlight करना चाह रहा हूँ. true, wonderful. Thank you guys. Numan, are you saying something? नहीं, एक्चुअली वही जो आई वाज सेकंडिंग व्हाट दानिश वाज सेइंग कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक स्पेशली, आई थिंक एट वन मोमेंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि यार हम शायद 10 साल पीछे चले गए, बट इन टर्म्स ऑफ डिजिटल अगर हम बात करते हैं तो हम शायद 2 साल आगे चले गए. The way we have been reconnected with each other, obviously there have been shortcomings as well, but slowly and steadily we are coming out of that digital shell. I personally think कि हम शायद उस shell से निकल के अब एक physical world में दाखिल होने लगे हैं, and which I believe would be our focus as well, that we need to get more and more involved physically on ground. Virtuality जो हमारा core model है, this is intact, और उसके बेसिस पे वी आर बिल्डिंग अ होल प्लेटफॉर्म. सो कोर मॉडल असाइड, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा इफ यू गिव मी अ मिनट. फोर्ड इन द यूएस, उन्होंने गाड़ी, ऑब्वियसली दे वर मैन्युफैक्चरिंग एंड आल्सो रिटेलिंग इट, उन्होंने एक बिजनेस सेगमेंट शुरू किया फॉर लीजिंग. नॉर्मली डीलर एंड पे होता है, आउटलेट एंड पे होता है, एंड इट टर्न्स आउट कि लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग फोर्ड कि यार आप जो है ना हम आपसे लीज करेंगे, और फोर्ड ने कहा ठीक है, फेयर इनफ, प्लीज कम ओवर. दे स्टार्टेड अर्निंग बिग बक्स, अ लॉट ऑफ मनी, बट बाय द एंड ऑफ द डे उनका जो सीईओ, उन्होंने कहा यार आई विल स्क्रैप दिस ऑफ, दिस इज नॉट अ मॉडल. आई डोंट केयर इफ वी आर अर्निंग मोर मनी देन आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बट वी आर फोकस मूविंग अवे फ्रॉम अ कोर मॉडल. सो उन्होंने अपना सारा लीजिंग का ख़त्म कर दिया, एंड देन दे एम्पावर्ड द रिटेलर्स अगेन. सो लर्निंग फ्रॉम दैट आइडिया यही था कि हम अपने कोर मॉडल पे रहते हुए, and we try to build step by step. And obviously if we waited 4 years building this virtual world or space, so why not wait a little more and expand further horizons and get physically involved. हमें जल्दी कोई नहीं है, हमें जल्दी कोई नहीं है. हमें जल्दी कोई नहीं है, लेकिन जो बता चीज हमें इतनी देर तक रोक के रखी है, उस सवाल पे मैं आऊंगा. आप बताएं पहले दानिश. तो क्या वो क्या बताएं आप ना. बोले? नहीं आप बताएं, मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं तो चुप रहने की मशक़ें कर रहा हूँ.
नहीं, अब आप बताएं, मैं फंस जाऊंगा। मैं कह रहा था जो चीज हमें रोकती है वो हमारी सोच है, वो हमारे बिलीव्स है, हम उसी के अंदर सोचते रहते हैं। अभी जिस तरह नुमान ने बहुत खूबसूरत एक रेफरेंस दिया ना, जब आप वो रेफरेंस पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में डब्बा बन जाता है। हम क्योंकि पढ़ते नहीं है तो डब्बे बहुत कम होते हैं। फिर जो सो क्या आपने रियलाइज किया है कि पाकिस्तानी मर्दों के, बॉयज के स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं जो डायलॉग में नजर आते हैं? ऑफ कोर्स आप सबकी तो सेम नहीं होते, लेकिन कुछ शेयर्ड बिलीव जिसपे सारा ग्रुप आप समझे कि सीरियस हो सॉरी, जाए, अच्छा टाइम है। टेक्स ऑफेंस, सो व्हाट वुड बी दोज बिलीव्स? हाय, क्या नाम है भाई इनका? सॉरी, है मेरा, मिन्हा। ये मुझे ना दूर से, मेरा ये मुझे बहुत दूर से ना घूर मिन्हा, रही थी बहुत। good. Distractions are welcome in the digital world. Wonderful. Lovely. I'm glad you included her. झाड़ भी तो वो ना खिला दो, चलो यहाँ से, दबाओ। मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो जो आंखें थी ना वो यूं मैंने कहा यार, अच्छा भाई, तो क्या बिलीव्स आपने अभी तक, इफ आई मे आस्क, डायलॉग में जो नजर आते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड बिलीव्स फॉर मेल्स, इन मेल्स आई मीन? कौन से वाले से start? religious, political, sports, sex, music, movies. मैं तो बताऊं, 4 चीजें हैं। पाकिस्तानी मर्द ना 4 चीजों के बारे में बात करता है। हाँ, सबसे अहम बात होने लगी है। दानिश बताएंगे हमें 4 Drum चीजें rolls. पाकिस्तानी मर्दों की। क्रिकेट, नंबर 1, क्रिकेट, क्रिकेट। रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेक्स। खत्म। मर्द डिफाइंड इन 4 थिंग्स। ये जो खत्म हुआ है ना मर्द, सेक्स के बाद जो मर्द खत्म हुआ है ना, Foreign. I would like a moment of silence here. All right, okay. I was interested in knowing कि इसके अंदर कोई beliefs, and I don't mean to say party belief, but सियासी हवाले से पाकिस्तानी मर्द कैसे सोचता है, दीनी एतबार से कैसे सोचता है, सोशल एतबार से, और ये वो चीजें होती हैं जिसको वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, that's what is truly reflecting a strong belief, या ऐसे ही होगा जिस चीज पे। तो जरा उस पे बता दें, आई थिंक आपका देखें, इसी नजरिया चीज है को और लड़ रहे डायलॉग से हैं। रिफ्लेक्ट होता है। ग्रुप इटसेल्फ, ये बहुत बड़ा पर्पस बता दिया आपने ग्रुप का। शुरू में ना हम पे बहुत प्रेशर आया था और अभी भी आता रहता है, यार रिलीजियस क्वेश्चन अलाउ नहीं किया करो, यार पॉलिटिकल क्वेश्चन क्यों अलाउ करते हो, यार ये पार्टी के बारे में कोई फलानी पार्टी के बारे में चीज क्यों अलाउ करते हो। हाँ, हम गाली अलाउ नहीं करते, कोशिश करते हैं, हम फेक न्यूज अलाउ नहीं करते, खामा की बकवास अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर कोई पब्लिश्ड आर्टिकल है, कोई पब्लिश चीज है, तो क्यों नहीं करें यार बात। हाँ, उसके अंदर वी डिसअलाउ डायरेक्ट अटैक्स, वी डिसअलाउ पर्सनल अटैक्स, वी डिसअलाउ डायरेक्ट अटैक्स ऑन अ रिलीजन, लेकिन रिलीजन पे क्यों नहीं बात हो सकती भाई। और बहुत इससे फायदा होता है, बिकॉज मैं आपको बताऊं, हमारी गाय टॉक सीरीज में तो चार गाय टॉक सीरीज तो आलिम ने की है। आई मीन, वजीउद्दीन इज अ सोल ब्रदर, he's a renowned speaker. He's spoken about feminism in Islam, he's spoken about jinns in Islam, he's spoken about so many different topics, and he's an alim. And there's a religious question coming in, so we have different alims on the group who can talk on a subject matter, who can give a proper answer to a question. तो क्यों रोके इस चीज को, इससे तो लोगों की लर्निंग होती है। हाँ, again, having a thin line in terms of direct attacks, policies there, reporter comment, member goes out, end of story, nobody gets hurt. That's how, and members can enforce it. We cannot enforce it. But putting a lid on religion, putting a lid on, मैंने जो 4 चीजें बोली है ना, इस पे आप लिड लगाने की कोशिश करेंगे, मर्द बात करना बंद कर देगा। रिलीजन पे ही बात करेगा ना, किस पे बात करेगा? फैमिली पे बात करेगा ना, और किस पे बात करेगा? ऑफिस पे बात करेगा, इमरान खान पे करेगा, नवाज शरीफ पे करेगा, 2-3 लोगों पे कर लेगा, और क्या करेगा? तो यही करेगा ना, और क्या करेगा। ट्रू। अच्छा, I'll add a few more pointers to what Danish said कि obviously religious पे आप या political इन चीज़ों पे आप कैप नहीं लगा सकते, but men in our society, especially in Southeast Asia, you might disagree कि हम लोग cultural, spiritual और religious point of view से अपनी mindsets को create करते हैं,
एंड ऑब्वियसली सबका एक अलग माइंड, एक थॉट होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है. यू कैन ऑलवेज क्वेश्चन इट, बट बाय द एंड ऑफ द डे सबको लगता है कि वो ठीक है और आप गलत हैं. ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज चैलेंज देम. एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन. It's not, maybe it's not about right and wrong by the end of the day. It's about their cultural preference, their spiritual preference. और हमें वही बात है ना, agree to disagree by the end of the day. आप कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. नुमान, हमारा जो रूल है, एक बहुत बड़ा रूल है हमारा, मूव ऑन. अपना ओपिनियन दो, मूव ऑन. ये बहुत बड़ा रूल है भाई. मूव ऑन. एक चीज है कि भाई एक बिलीफ था, तूने उसका काउंटर आर्गुमेंट दे दिया, बता दी बात, उसके बाद मूव ऑन. डोंट कंटिन्यू दैट. तो उसके ऊपर हमारा एक प्रॉपर रूल बना हुआ है. मूव ऑन इटसेल्फ इज द रूल. कंटिन्यू टू I remember in English series Lost के नाम से, जो obviously किसी ने देखा होगा. I myself was lost watching the whole season, but उसमें end में एक point आता है, to remember and let go. So that was the crux of the whole process, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मुतमईन हो गया था. हाँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आ गया कि to remember and move on and let it go. तो ये this is what it reflects. True, wonderful. क्या minuses and pluses? We are in the 52nd minute. मुझे पता नहीं चला. It feels like a boys gathering to me. क्या plus और minus मर्दों को बात करें? We have a background score here. Yeah. Okay. So they have a plus. They have a background score. Plus, it's okay. So plus, सबसे बड़ा plus ये है कि जोड़ने की बात करता है. ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता. जोड़ने की बात करता है, एंड्योर करने की बात करता है, बर्दाश्त करने की बात करता है. सीधी बात बता. I mean, there are people who are ganging up on each other, telling each other कि ये मत करो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम सही करो. You have to fix it. So many times. Minus क्या है? Too egoistic to accept गलती हो गई. गलती हो गई, सॉरी, नहीं बोलता. मर्द गलती मान ले तो जरा मर्दानगी में उसको कमी महसूस होती है. ग्रुप छोड़ देगा, मानेगा नहीं वो. ग्रुप छोड़ देगा, मानेगा नहीं. ये तो नए दौर का मुहावरा हो गया. रस्सी क्या हो जाएगा, चल कवर फोटो हो गई अब तो अपनी. गुड, वेल सेड, वेल सेड. लेकिन ये यही मैं आपको कहूँ ना कि प्लस सबसे बड़ा यही है. इमोशनल है, सेंसिटिव है, जान दे देगा, रोड पे चला जाएगा, राशन दे देगा. कोरोना को अरीब, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय बेस्ट वॉलंटियर्स, अरीब हसन अंसारी. दे मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ a lot of good work. I mean, वो यार रात को पूरी रात he works. He has a shift job. Wakes up in the morning at 11, goes to Park Colony and gives what 70 rations. 2700 से ज्यादा फैमिलीज को सिंगल हैंडेडली 2 लोगों की टीम के साथ सपोर्ट कर चुका है. There's a team of 12-15 other volunteers as well. But इस तरह के लोग हैं, you name it. I mean, pluses. उतर जाएगा, फील्ड में उतर जाएगा, सोचेगा बाद में, पहले कर देगा. और जिधर गलती प्रूव हो जाएगी ना, तो मानेगा नहीं. ये माइनस है, सबसे बड़ा माइनस है, मानेगा नहीं. चलिए, बहुत अच्छा पैगाम है. वेरी वेरी गुड पॉइंट्स देयर. दानिश, नुमान, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? आई थिंक द सेम, बट हम प्लसेस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एवरी member will share his unconditional opinion and suggestion based on his experience, and he will give you the hard fact whether you like it or not. And at the same time, minuses आपको वही सबसे बड़े जो नेगेटिव इमोशंस हैं कि हम जज्बाती लोग हैं, जज्बाती कौम हैं. हमें कोई चीज़ जो है वो मानने में बड़ा मुश्किल होती है और बहुत कन्विंसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. हम नहीं मानेंगे, फिर बाय द एंड ऑफ द डे फिर सबको जो करना है वो खुद ही अपने हिसाब से करेंगे. True. Thank you. Very good insights there. Last couple of questions. क्या challenge है आपका running this community? You both work your day jobs. You spend time doing this. अब आपके पास team भी है, लेकिन it is still a lot of time investment, and I must congratulate you on it. Thank you for it. It's not easy doing this. Anybody who does it deserves a lot of salam and dua to continue doing it. क्या challenges हैं आपके? नहीं उमेर, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ताज सिर्फ हमारे सर पे नहीं, पूरे ग्रुप के सर पे भी जाता है, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. एंड ऑब्वियसली जिस तरह दानिश ने कहा, पूरी टीम हमारी मॉडरेशन की, सो वी आर वर्किंग डे एंड नाइट. अच्छा, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द सेम टाइम जोन,
Faizan is in Dubai, Ammar, Muiz, Faizan, Middat, I and Danish, we are in Karachi. So we have to manage a global communication in one time zone. बट हम लोग रात के 3 बजे भी शायद जाग रहे होंगे, फजर पे उठेंगे नमाज के लिए तो उस वक्त भी मोटिवेशन चल रही होगी. सो वी हैव टू मैनेज इट एंड इट्स नॉट लाइक कि हम आउट ऑफ ग्रांटेड ले रहे हैं या हमारे ऊपर कोई प्रेशर है या हमें पैसे दिए जा रहे हैं. वी लव डूइंग इट बिकॉज हम जब पोस्ट पे देख रहे होते हैं कि रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और एक भाई का मसले का हल हो रहा है, सो इट नॉट ओनली गिव्स अस द सेटिस्फैक्शन बट एज अ ग्रुप. बिकॉज किसी ने बड़ा अच्छा एक मीम डाला था कि मेरे साथ ये मसला है, तो एक आके बंदा, there's a Bugs Bunny meme, he's saying कि हमारे साथ मसला है, it's not you, it's us. So it's collectively and obviously जिस तरह what we do is कि हमारे पास every month we getting an influx of lot of members, so we keep on hammering. Danish has this process of sort of filtration of members and keeping on making sure कि यार जो नए members आए they know कि यार जो बेचारे 4 साल से members बैठे हुए, they're following the rule, so why not, you're not any different, so you should follow the same pattern so that we can maintain the safe ecosystem of the group. True. Danish, would you like to add anything? And इससे पहले, if anyone of you would like to join the live conversation, Soul Brothers जो मौजूद है, अगर आप आना चाहेंगे, if you want to say something, ask a question, here is the link. ये मैं आपको comments में भी paste कर सकता हूँ. Do join in, share your opinion, ask your questions. We have the last few minutes. Danish. सबसे बड़ा challenge, agreed to what Numan said, adding to it, self-sustenance. सबसे बड़ा challenge. बंदा आए, पुराने लोग आए, एक दूसरे की मदद करें, खुद ही चलाएं. हाँ, पर्सनालिटी कल्ट्स बनते हैं, हाँ, फॉलोइंग क्रिएट होती है, हाँ, ग्रुप के अंदर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कोई ज्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं. एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन, एक एग्जाम्पल है, क्लीशेड है, लेकिन इदारा वही अच्छा होता है जो किसी एक चीज पे डिपेंडेंट ना हो, किसी एक पर्सन पे डिपेंडेंट ना हो, किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट ना हो. एक इदारा वो अच्छा होता है जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जिसके अंदर नॉर्म्स इतने क्लैरिफाइड हो कि हम बार बार यही चीज इनपोर्ट करते हैं. यही चैलेंज है रोज का हमारे पास, जब मेंबर्स का इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा है. दे हैव टू इंश्योर मैनेजमेंट, दे हैव टू be less complaining, they have to be the ones who lead it and own it, whether it's your group, whether it's your city, whether it's your country. That is how it's going to work. That's how I say, from starting from a digital group to a whole country, ownership. True. That is the biggest challenge. Very nicely said कि institution बने, shared ownership हो. And it's again, you also said that one can't do away with the tribes that are formed, but institutions need to be bigger. Ask your questions. अगर आपका कोई सवाल है, Soul Brothers Pakistan is a wonderful community of males, 92,000 members strong now, great support group, बहुत सारी causes, crowd सपोर्ट हासिल करती हैं, बहुत अच्छे ओपिनियंस जनरेट होते हैं, दुआएं आप जनरेट कराते हैं, प्रमोट करते हैं, सवालात पूछते हैं. इफ यू वांट टू आस्क द फाउंडर्स नोमान एंड दानिश विद अस, जो लोग, कुछ लोगों को फिक्र है उनको ग्रुप मिल नहीं रहा और मुख्तलिफ तरह के ग्रुप मिल रहे हैं. सोल ब्रदर्स पाकिस्तान इज द ग्रुप. वुड यू लाइक टू एम्फसाइज द ग्रुप्स? फेसबुक पे हैं दानिश? So we're on Facebook page है, Facebook group है. ग्रुप में 90,000 वाला एक ही है, उसके अलावा कोई 90,000 वाला मिलेगा नहीं. काउंटर ग्रुप्स में, और इसमें वाहिद फर्क यही है कि 90,000 वाला एक है. एक मेंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट कर लो. सॉरी टू से, हमारा जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इट टेक्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 days for a member's request and to actually ending up in the group. There is a reason we are 90,000 right now. अगर आज मैं ग्रुप खोल दूं और ऑल इनवाइट करके सब, अगर 90,000 मेंबर अपने खाली 200 दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं तो ग्रुप जो है ना, मिलियन का ग्रुप हो जाएगा. बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू डू. वी कम स्लोली हियर. मैंने जो जल्दी नहीं है वाला पार्ट बोला था, सो it's going to take some time. We look at the filtration process and oldest first, and those members who've answered the questions and those members who have agreed to the rules and policies get priority. You have point ये भी है दानिश, जो दानिश कह रहे हैं कि point is not कि हम लोगों को ठुसाएं and we add as much as members as we want, because overnight we can reach 150,000 members. What matters is the quality which comes in. So credibility of the member, the profile, and how old is the profile. Obviously there's a whole check to it. क्वालिटी का ये मतलब नहीं है
क्वालिटी हमारी नजर में ये भी डिफाइन करते हैं हम, फेक प्रोफाइल ना हो, रेलेवेंट हो, इनवाइट्स को प्रेफरेंस मिलती है, अग्री टू रूल्स को प्रेफरेंस मिलती है। क्वालिटी ये नहीं है कि हम किसी को बैठ के जज कर रहे हैं कि इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसको ग्रुप में नहीं डालना, या ये कोई छोटे शहर से है तो इसको ग्रुप में नहीं डालना। दैट्स नॉट क्वालिटी फॉर अस। एवरीवन इज वेलकम, every city, every part. If he's a Pakistani, he deserves to be on the group. There is no discrimination on those grounds. Wonderful, wonderful. क्या plans and last question? We are an hour into this. Thank you guys for taking the time out. कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आपके आगे के मंसूबे? I think मंसूबे बनाए नुमान, मंसूबे कब बनाए होंगे? मनसूबा बंदी जो है वो चल रही है इसमें। अच्छा, इसमें आइडिया ये है कि हमारे पास एक तो इंटरनेशनली Soul Brothers is not just limited to Pakistan but across the world as well. So we have members as far as from East Russia as well. But हमारे chapters हैं, so we have in Melbourne, we have in Sydney, we have in UAE, we have in Toronto, we have in London. So ideas कि उनको और ज़्यादा बेहतर लॉस एंजल्स में भी है। हमारी पूरी ये कनेक्टिविटी करनी है। इनफैक्ट वी नीड टू गो आउट इन फिजिकल वर्ल्ड और हम ऑन ग्राउंड जो है थोड़ा सा अपनी प्रेजेंस करें। ऑब्वियसली हमारी सोशल मीडिया पे 360 डिग्री एक प्रेजेंस है, बट वी वुड वांट टू एक्सपैंड द होराइजंस फर्दर। और डिजिटल के तो हमारे मास्टरमाइंड दानिश हैं, सो आई थिंक ही कैन शेड मोर लाइट ऑन दैट एज वेल। Well, there are a lot of possibilities. I mean, going from a group to a blog, to a website, to an app which connects people. I mean, there are limitless possibilities. For now, we want to focus our energies on basic available platforms that we have, so that the quality is not compromised. But at the same time, we do have intentions, not plans. I dare not say plans. इंसान की क्या औकात है वो प्लान करे। इंटेंशंस हैं कि Wish you all the best. Wish you all the best. Wonderful. So, What a pleasure, Noman and Danish. Having this chat with you. और मैं group तो देखता रहता हूँ. That's the only group that I get to see, by the way. And it's been a pleasure knowing that you come from a deeper place. It's not just a marketing group. And वो काम में भी नजर आता है, sustainability में भी नजर आता है. अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे by doing very small things sometimes. And this is not small, by the way. 5 years and 90,000 plus members vetted, selected, or screened and then managed over this time is not small. But I must say that even small things sometimes from our end, alongside our day jobs, a couple of hours somewhere, या social media पे किसी की बात का जवाब दे देना, we don't know how far it goes. And I know for a fact that your group over the years has enabled many men, given them confidence कि वो सवाल भी पूछ सकते हैं और उन्हें पता है कोई भाई जवाब भी दे देगा, और यस, ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे डिवाइडेड नेशन के अंदर एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना जो इंक्लूसिव हो, बहुत ही इट्स वर्थ appreciating. Well done, keep it up. Any message you would like to leave us with? Noman, you start. I think then again the digital world is upon us, और जिस तरह हम advancement की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे trust issues, credibility issues भी हैं. We always focus किया, always share positive news which is in favor of Pakistan. Keep a nationalistic approach. Avoid fake news. हमारे neighboring countries में issues आते हैं, वो they are always maligning news, ये वो. So always share positive news. Yes, we know the ground realities, how bad situations are, how bad it could be further. But obviously we need to be in a sane mindset. एंड हम यही दर्स अपने लोगों को दें, और जो हम वाला फैक्टर है ना, जो वी वाला फैक्टर है, उसको ऑलवेज कीप दैट इंटैक्ट. दैट्स हाउ नेशंस प्रोग्रेस एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रोग्रेस इंशाल्लाह. That's how we can progress. Noman, thank you. Danish? Pretty much similar. I mean, me and Noman, as long as the overall thought process is concerned, I don't know, इस बात से हमें पता चला कि we're two different personality types, but at the same time we understand each other inside out. Sometimes I don't even say things and he knows what I'm gonna say.
So my message would be very simple. I'm telling my intention again, not plans. That my message is to make this thing as big as possible, as impactful as possible, as useful as possible. Uh, don't As something that unites us as people, as something that increases our morale, as something that makes a difference with those little things, as something जिससे कोई एक दफा वही वाली बात है कि रात को सोने से पहले he has a smile on his face. I think that is the biggest thing we can do for society. Wonderful. Thank you very much, Danish and Numan. Stay well. Khudafiz. Thank Be you. Allah Hafiz. Hafiz. blessed. It was lovely having you on the show. These were the Soul Brothers, popular Facebook group, over 2,000 members strong now. उनके founder से हमने बात की community building. बहुत अहम रोल है आज के दौर में, और बहुत सारे लोगों की मसले हल कर सकता है. हमारे डिवाइड्स जो कि फिजिकल रहे, जोग्राफिक रहे, रिलीजियस रहे, रेशियल रहे, वो डिजिटल दौर में हल हो सकते हैं, और सोल ब्रदर्स इसकी जीती जागती मिसाल है. बहुत मजा आया बात करके. आई होप यू लाइक्ड इट. डू लीव योर फीडबैक, your comments on this. Faria says it's going to be controversial. I don't think it's going to be controversial. And if this is controversial, then I am that. Thank you guys. Stay well. अपना ख्याल रखें. SOP जरूर follow करें. मुलाकात होगी आपसे कल.